नमस्कार। आज का लेक्चर में हम देखेंगे बेस्ड ऑन एलिप्स क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है। सो एग्जाम्पल द इक्वेशन x स्क्वायर बाई 10 माइनस a प्लस y स्क्वायर बाई 4 माइनस a इक्वल टू 1. This represents an ellipse if a less than 4, a greater than 4, 4 less than a less than 10 or a greater than 10 में होना चाहिए. So now here the equation is x square by 10 minus a plus y square by 4 minus a equal to 1 दिया है. हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पता है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1. सो ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा. सो पॉजिटिव मतलब 10 माइनस a ग्रेटर दैन 0 and 4 minus a greater than 0. So 10 minus a greater than 0 है तो 10 is greater than a and 4 is greater than a. अभी इन दोनों में से क्या कंडीशन आपको सेटिस्फाई करेंगे. So a is less than 4 and a is less than 10. If a is less than 4, it itself satisfies your a is less than 10. So we get that as a is less than 4. We will mark as the option for this. So इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, x स्क्वायर बाई 10 माइनस a प्लस y स्क्वायर बाई 4 माइनस a इक्वल टू 1. We know the standard form is x square by a square plus y square by b square equal to 1. It should be positive, इसलिए a दोनों पॉजिटिव होना है. So पॉजिटिव होना है तो 10 minus a is greater than 0 and 4 minus a is greater than 0. उसमें से हमें मिला है 10 greater than a and 4 greater than a. That means a is less than 4 and a is less than 10. So a less than 4 itself concludes that or contains that a less than 10 also. इसलिए option is a less than 4. अब अगला एग्जाम्पल क्या बोलता है. इसमें the radius of the circle passing through the foci of the ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1 having its center 0, 3 is option 4 या 3 या root 12 या 7 by 2. So the equation here x square by 16 plus y square by 9 equal to 1. Here what they say, the circle is passing through the foci. So first foci निकालना है. So foci निकालना है तो foci क्या होता है, that is plus minus ae, 0. क्यों प्लस माइनस ए कमा 0, 16 is greater than 9. That means a is greater than b हो गया. That is a standard equation of an ellipse. So इसमें से ये क्या है 4 and we have to find e is what. So e क्या मिलेगा, root of 1 minus b square by a square. So root of 1 minus b square by a square है तो root of 1 minus b square क्या है 9, a square क्या है 16. So मिलेगा आपको roots of 7 by 16 या root 7 by 4. So now here the radius of the ellipse circle passing through. So now we got a is root 7 by 4. So root 7 by 4 e मिल गया तो ae मिल जाएगा. So ae क्या है, you will get plus minus root of 7 by 4 into 4 because ae, this is e and this is 4. So this get cancel, you get plus minus root 7. So foci क्या मिल गया, you get plus minus root 7 comma 0. This is your foci. Now a circle is passing through, one is root 7 comma 0 minus root 7 comma 0. It is passing through the foci and having its center 0, 3. So having its center 0, 3 is this.
हमें क्या मांग रहे हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल. सो द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा? द डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर. सो द रेडियस मिलेगा रूट ऑफ √7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर या रूट ऑफ 7 प्लस 9 रूट ऑफ 16 that is equal to 4. So the radius of the circle क्या मिला है? 4. So our option is A. इसमें क्या किया है पहले? It is given that as the radius of the circle passing through the foci of the ellipse. So पहले हमने निकाला है foci. उसके लिए एक्सेंट्रिसिटी चाहिए था. सो एक्सेंट्रिसिटी E is √7/4. उसके बाद हमने निकाला है फोकाई is what? So foci is plus minus √7, 0. That is AE is √7/4 into 4. उसमें से AE मिला. That is plus minus √7, 0. A circle is passing through this foci and having center 0, 3. So the radius क्या मिलेगा? Root of the distance between these 2 points. वो मिला है आपका 4. अब third example क्या बताते हैं देखो. So third example में क्या है? The equation of the ellipse whose focus is 1 minus 1, directrix x minus y minus 3 equals 0 and eccentricity half is given. Then we have to see the option which is right one. So now what are the things or what are the information given? The focus, that is S RF1, is given as 1 minus 1. And then the directrix equation is given x minus y minus 3 equal to 0 भी दिया है और eccentricity E is half दिया है. ये 3 इंफॉर्मेशन दिया है तो हम किस फॉर्मेट में हम इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स निकाल सकते हैं. सो इसमें क्या है हमें पता है SP equal to EPM. A point is fixed S, that is 1 minus 1, and a line is fixed, that is x minus y minus 3 equal to 0, and a moving point P is here. Then the distance, the ratio of the distance of a moving point is a constant. That constant is E we have. So from that the relation is SP equal to EPM. So SP here, P is any general point xy. So SP क्या होगा? X minus 1 whole square plus y plus 1 whole square under root equals E is here half. Then PM, the distance of this line from this point, that is modulus x minus y minus 3 divided by a square, that is 1 square, b square, that is minus 1 square. So 1 plus 1 you get. अब ये स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग करिए. If you square it, you get x minus 1 whole square plus y plus 1 whole square equals, if you square here, it becomes 1/4 और ये √2 भी 2 हो जाएगा. So 1/8 into x minus y minus 3 whole square मिला. अब इसको क्रॉस करो और इसको एक्सपैंड भी कर लें. सो क्या मिलेगा? 8 into x square minus 2x plus 1 plus y square plus 2y plus 1 equals, ये लग रहा है आपको ये plus b plus c whole square format. So a square, that is x square plus b square, that is minus y square plus c square, that is 3 square is 9. A square plus b square plus c square. Then 2ab, but here in between minus. So 2xy और 2bc, ये दोनों नेगेटिव है इसलिए प्लस 6y और x और 3
that is 2ac. So that gives us minus 6x. So a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. अब सबको एक ही साइड में लेके आते हैं तो 8x square minus x square you get 7x square और ये minus 2xy इधर आएगा तो plus 2xy और 8y square minus y square मिलेगा 7y square और इधर minus 16x है और इधर से माइनस x इधर आएगा तो माइनस 16x प्लस 6x यू गेट माइनस 10x और y का टर्म है इधर 16y है इधर प्लस y है इधर से इधर आएगा तो माइनस है सो प्लस 10y और कांस्टेंट इज 8 प्लस 8 इंटू 2 दैट इज 16 और इधर से 9 है सो यू गेट plus 7 equal to 0. So we got the equation of an ellipse as 7x square plus 2xy plus 7y square minus 10x plus 10y plus 7 equal to 0. अब चेक कर लो ऑप्शन कौन सा होगा. So 7x square plus 2xy plus 7y square minus 10x plus 10y plus 7 equal to 0. So this will be the right option for this solution or for this question. So we got or we have used the condition that is SP equal to EPM. When they have given the focus and a fixed line that is a directrix, then we get the equation A with the help of the formula SP equal to EPM. Now next example, fourth में क्या है? The equation 5x minus 1 whole square plus 5y minus 2 whole square equal to lambda square minus 2 lambda plus 1 into 3x plus 4y minus 1 whole square. This represents an ellipse. If it is representing an ellipse है तो क्या value lambda की मिलेगा या where it is belonging to this set of values of lambda. उसके लिए पहले हमें दिया है 5x minus 1 whole square plus 5y minus 2 whole square equals lambda square minus 2 lambda plus 1 into 3x plus 4y minus 1 whole square. ये इक्वेशन दिया. इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करें. इसमें से 5 बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 25 x minus 1 by 5 whole square plus इसमें से भी बाहर निकालो क्या मिलेगा 25 into y minus 2 by 5 whole square equals ये क्या लग रहा है आपका फार्मूला lambda minus 1 whole square into 3x plus 4y minus 1 whole square. So ये मिला है. अब इसमें से ये 25 को नीचे ले आना. So क्या मिलेगा x minus 1 by 5 whole square plus y minus 2 by 5 whole square equals lambda minus 1 whole square into 3x plus 4y minus 1 whole square upon 25. ये मिला है. सो इसमें से क्या मिल रहा है अभी ये बन गया आपका SP स्क्वायर और ये देखिए ये 25 क्या है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट मीन्स 9 प्लस 16 लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख सकते हैं. सो नाउ दिस इज योर SP स्क्वायर इक्वल्स E स्क्वायर इनटू PM स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया. सो इसमें से E क्या है लैम्डा माइनस 1. सो E इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1. हमारा इट इज रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स. सो एलिप्स है तो क्या कंडीशन है
फॉर ellipse e should be less than 1. So e should be less than 1 है तो lambda minus 1 should be less than 1. So lambda minus 1 less than 1 है तो क्या मिलेगा? lambda is less than 2 मिलेगा. lambda is less than 2 मिल गया. अब मिल गया lambda is less than 2, मगर ये e क्या है? पॉजिटिव होना है. दिस e lies between 0 and 1. So e lies between 0 and 1 है तो it is 0 से 2. So it will be more than 1. So lambda value is more than 0 and less than 2 होना है. So lambda की वैल्यू e 0 to 2 है, मगर ये देख लेना if lambda equal to 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो 0 है तो it is not going to represent an ellipse. So therefore lambda should not be equal to 1. So lambda should not be equal to 1 है तो इसमें तो हम लिखा सकते हैं this is an open interval 0 2. So lambda is belong to this 0 2. So lambda belong to 0 2, मगर lambda not equal to 1 है, so minus 1. So lambda belongs to 0 to minus 1. So क्या किया हमने? इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, उसमें से हमने ले किया है इस पैटर्न में जो हमें पता है. सो दैट इज SP इक्वल टू EPM फॉर्मेट में ले किया है. सो उसमें से कंडीशन क्या था? E is equal to lambda minus 1. So मगर lambda this E must be less than 1. उसमें से हमें lambda की वैल्यू मिला है, मगर lambda should be positive. So इसलिए and lambda cannot be equal to 1 since it cannot be 0. इसलिए हमारा ऑप्शन lambda belongs to 0 to minus 1. This B is the right answer. अब अगला 5th एग्जाम्पल में पहुंचे. In this, the eccentricity of an ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1, whose latus rectum is half of its major axis. So क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद आगे शुरू करें. So हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेंट्रिसिटी. और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? इसका लैटस रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस. सो क्या 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 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए? ये वी हैव टू फाइंड आउट. सो लैटस रेक्टम वी हैव टू फाइंड आउट. सो लैटस रेक्टम का रिलेशन दिया है. लैटस रेक्टम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? 2b squared by a. So 2b square by a is your latus rectum. That is length of latus rectum. That is given half of its major axis. Half of its major axis है तो क्या होगा? So major axis is what? 2a. So half of major axis a हो गया. So that means this latus rectum 2b square by a equal to a मिला है. So 2b square by a equal to a है तो 2b square equal to a square हो गया. So इसमें से हमें a square equal to 2b square मिल गया. अब हमें क्या करना है? एक्सेंट्रिसिटी. एक्सेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला है? It is root of 1 minus b square by a square. That is root of 1 minus b square by, हमें क्या रिलेशन मिला है? a square is 2b square. So upon 2b square. So that gives us root of 1 minus 1 by 2. So this will give us root of 1 by 2 या 1 by root 2 मिलेगा. So हम क्या फाइंड करना है? एक्सेंट्रिसिटी. क्या इंफॉर्मेशन दिया है? latus rectum is half of its major axis. So if it is in the standard form, latus rectum is 2b square by a,
or major axis is 2a. So semi-major axis, that is a half of the major axis, is a. So उसमें से हमें relation b और a का मिला 2b square equal to a square. We put that value in the formula, eccentricity equal to root of 1 minus b square by a square. उसमें से हमें क्या मिला है, e equal to 1 by root 2. अब चेक कर लें ऑप्शन. So a is the right option. अब अगला एग्जाम्पल क्या है? If 5, 12 and 24, 7 are the foci of an ellipse passing through the origin, then the eccentricity of the conic is what? इसमें क्या 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 इंफॉर्मेशन दिए हैं वो देखना. So 5, 12, 24, 7 are the foci. So two fixed point हमें दे दिया. That is, you can take S, S dash. S आपने ले लिया 5, 12 और S dash हो गया 24, 7. They are foci of an ellipse. This ellipse is passing through the origin. So that means there is a point like this straight track with this major axis. So this is a point P, it is passing through origin. That is, ellipse is passing through origin. So SP is dash P, we get that. So what is now SP? The distance of these two is, now we know two fixed point, then a point is moving such a way that it is forming an ellipse. Therefore, we know the condition that SP plus S dash P equal to 2a. That is the length of the major axis. This one we know that. So for that, what is SP? So SP क्या होगा? The distance between these two. That is the root of 5 square plus 12 square. That gives us 13. Or S dash P, that is the root of इन दोनों का. So 24 square plus 7 square, that gives us 25. So now we got SP, S dash P. Now what is SS dash? That is the distance between foci. So the distance between foci, what you get normally, that is a 2AE मिलता है. So 2AE is SS dash. So SS dash क्या है? इन दोनों का distance. So that is root of 24 minus 5. So 19 square, 7 minus 12, that is 5 square you get. So ये क्या मिलेंगे? AE 2AE is root of 361 plus 25 या root of 386. ये मिला है 2AE. हमें क्या पता है? SP plus S dash P equal to 2A. So SP क्या है? 13. S dash P क्या है? 25. So 13 plus 25 equal to 2A. So that means 38 equal to 2A. We got 2AE and 2A. हमें क्या find करना है इसमें से? Then the eccentricity is what? Eccentricity of the conic. इसमें से find कर सकते हैं क्या? कैसे find करेंगे? 2AE upon 2A. So 2AE upon 2A क्या मिलेगा? E. So 2AE upon 2A, that gives us E. So that is equal to 2AE क्या था? This one, that is root of 386, and 2A is what? 38. So that is root of 386 by 38. That is your E. That is what we have here. SS dash upon SP plus S dash P is your E. Yes, S dash by SP plus S dash P is your E. So from this we get E equal to root 386 upon 38. Now check the option.
Root 386 by 12, it is not. Root 386 by 13, it is also no. So root 386 by 25, it is also no. The last one, root 386 by 38. This is your required option of it. Example 7. क्या बताते हैं? Locus of the point which divides double ordinate of the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 in the ratio 1 is to 2 internally is what? So we have to find the locus. Locus means we have to get the equation of what it is forming. So let us take this ellipse as this is your ellipse. Double ordinate means a line drawn parallel to y axis perpendicular to this axis. So perpendicular to the axis. Now we have this is a line. A point P is dividing this line in the ratio 1 is to 2. So let us take this point as h comma k. Let us take this point as h comma k. So if this is a h comma k, then what we get? This one is h comma 0. So this line is x equal to h मिलेगा. So कोई भी point on this line है तो x equal to h मिलेगा. So let us take the end point of this double ordinate as h comma y1 or a h comma minus y1 down. So now this h comma y1 lies on this ellipse. So lies on this ellipse so it should satisfy. So h square by a square plus y1 square by b square equal to 1. Now how to find the value of y1? y1 हमने लिया है. So now this point P of hk is dividing these endpoints in the ratio 1 is to 2 बोला है. So section formula क्या बोलता है? So h equal to 1 into h and plus 2 into h. So you get h plus 2h by 3. That gives us the coordinate of first coordinate, that is x coordinate. Then k equals, k is what? So you 1 into minus y1. So minus y1 plus 2 into y1 by 1 plus 2 that is 3. So मिलेगा क्या है? 2y1 minus y1 y1 by 3 that is equal to k या y1 equal to 3k. So हमें मिल गया y1 की वैल्यू क्या है. Now replace in this equation. So मिलेगा h square by a square plus 9k square by b square equal to 1. So this h and k are any arbitrary point. इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हम चेंज कर सकते हैं x और y में. So x square by a square plus 9y square by b square equal to 1. So this is the required locus of the point P which is dividing this double ordinate in the ratio 1 is to 2. अब ऑप्शन देखें. So x square by a square plus 9y square by b square equal to 1. आपको क्या आ रहा है? x square by a square plus 9y square by b square equal to 1. So this is your option for this. आज हमने देखा है based on the basic formulas of ellipse